Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज फर्स्ट वीकली मास्टरमाइंड ऑफ दिस दिसंबर मंथ, जहां पे हम लोगों ने ओवरऑल मार्केट में काफी अच्छी मूवमेंट देखी और बेस्ड ऑन दैट व्हाट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इन 1 वीक एंड 2 वीक्स डाउन द लाइन, वो हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे और कौन से सेक्टर्स हैं जो एट दिस मोमेंट आउट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्रेड्स ले सकते हैं इधर ऑन द लॉन्ग साइड और ऑन द शॉर्ट साइड। वो हम लोग अच्छे से समझेंगे यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच एंड 7 स्टेप एनालिसिस, where the top down approach is nothing but analyzing 3 time frames, that is monthly, weekly and daily, where monthly depicts long term trend, weekly depicts medium term trend and daily depicts short term trend from swing trading perspective। और हम लोग 7 स्टेप एनालिसिस में से 4 चीजों का यूज करते हैं, दैट इज प्राइस, पैटर्न, मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी, जिसमें से प्राइस एंड पैटर्न हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं। एंड देन वी हैव मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी। मोमेंटम में हम लोग आरएसआई का यूज करते हैं, अनकन्वेंशनल आरएसआई, दैट इज ऑफ 60-40। और वोलेटिलिटी के लिए हम लोग बॉलिंजर बैंड्स का यूज करते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड दैट कौन से सेक्टर्स बहुत ज्यादा वोलाटाइल हैं, यानी कि बहुत क्विकली मूव कर रहे हैं इधर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट वीकली मास्टरमाइंड फॉर दिस वीक। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल न्यू हो, प्लीज डू मेक श्योर दैट हमारे पिछले वाले एपिसोड जो हैं 2 से 3 एपिसोड्स को आप अच्छे से देखो, ताकि आपको हैंड्स ऑन ग्रिप आ सके दैट हाउ डू वी एनालाइज एंड हमारा जो ओवरऑल एनालिसिस का तरीका है वो आपसे रेजोनेट कर पा रहा है या नहीं। बिकॉज इफ नॉट, then I would highly encourage you to stop watching this video here itself and start opting in for the videos of someone whom you can resonate with, जिसका आपको एनालिसिस का तरीका पसंद आता है या फिर आपको समझ में आता है, and with which you can actually analyze the markets as well in an easy format and so on. So I hope that you are going to do it because it's all about having one coach and one approach. मेरा approach यही है, this is what I've learned from my mentors, so that's why I'm going to teach this only. मैं कुछ ज्यादा tools and indicators का use नहीं करने वाला हूँ like MACD, stochastics and so on. I'm only going to use basics, that is RSI, Bollinger Bands and candlestick chart, nothing else, right? So I hope it's clear to you. So once again, welcome to वीकली मास्टरमाइंड फॉर 7 दिसंबर 2025, जहां पे हमारा एजेंडा रहेगा। सबसे पहले हम मार्केट इंडेक्स देखेंगे, देन वी विल हैव अ लुक एट आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स। तो सबसे पहले मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी डाउन बाय 0.06, काइंड ऑफ नेग्लिजिबल मूवमेंट है। सेंसेक्स अप बाय 0.01, बैंक निफ्टी अप बाय 0.04, अगेन ये भी काफी नेग्लिजिबल मूवमेंट है। मिड कैप डाउन बाय 0.22, इंडिया विक्स डाउन बाय 11.18, which is great for Indian markets, and USD INR up by 0.64, which is not so good. देन वी हैव निफ्टी 50 के ऑल 3 टाइम फ्रेम्स, जिसमें से सबसे पहले मंथली चार्ट देखें तो मंथली इज अबाउट 60 एज ऑफ नाउ। यहाँ पे छोटा सा बेरिश हैमर फॉर्म हो रहा है अगेन। ये जो है स्टार्ट ऑफ द मंथ में काफी ज्यादा बेरिश मूवमेंट आई थी, बिकॉज ऑफ विच ये कैंडल बनी है। अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड सो फार ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो मंथली में कोई टेंशन नहीं है, ऑल टाइम हाई जोन के लिए अभी भी एस्पिरेशन चल रहा है। देन वी हैव वीकली टाइम फ्रेम विच इज अगेन अबाउट 60, सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेंड आर बुलिश। एंड देन वी हैव डेली चार्ट विच इज एग्जैक्टली एट 60। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन है, बिकॉज अगर वो 60 का ब्रेकआउट कर देता है तो हमें और बुलिश साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, एंड देन वील सी ऑल टाइम हाई जोन ऑन निफ्टी 50। इफ नॉट, देन इट कैन फर्दर गो इनटू अ कंसोलिडेशन ट्रेंड, यानी कि अगर कल, दैट इज मंडे, वहां पे अगर बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो 60 का रेजिस्टेंस बन जाएगा, विच मीन्स इट विल मेंशन आई एम नॉट सो बुलिश, एंड देन फॉर द टाइम बीइंग इट कैन गो इनटू अ कंसोलिडेशन ट्रेंड, और एल्स थोड़ा सा साइडवेज में जाके देन इट कैन गिव ब्रेकआउट एज वेल। सो आई होप दैट इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस अंटिल इट्स ब्रेकन आउट, और ये रेजिस्टेंस तो ऑल टाइम हाई जोन का है, जिसको ब्रेकआउट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज ऑल टाइम हाई है, कोई बेसिक या फिर नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है। Then we have Bank Nifty. Again, यहाँ पे all 3 time frames are above 60, which means all 3 time frames are performing very good, are sustaining above 60, which means overall banking sector is very very bullish। और अगर banking sector में भी देखा जाए, like as you can see here on daily time frame as well, higher top higher bottom series बन रही है with respect to price action as well, which is straightforward depicting that this is in an uptrend। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में भी हम लोग सेग्रीगेट करें बिटवीन प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स, तो सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स all 3 time frames above 60, which means private banks are also outperforming now and already वो all time high zone के आसपास ही है। then we have PSU banks which are again all time high zone के आसपास, but यहाँ पे जो है like we saw a very big bearish candle on Wednesday, because of which यहाँ पे it turned around
within the zone of 40-60 on daily chart. So because of which थोड़ा हो सकता है that it could consolidate and then it could give us breakout once again. But for the time being, PSU banks थोड़ा सा consolidation में जा सकते हैं. Overall long term and medium term trend is still bullish. Then we have sector specific के charts देखें, like sector specific का पहले percentage wise movement देखें. So one of the outperforming sectors was IT, up by 3.47, followed by auto 0.59, metal 0.45, and so on. Whereas bearish side sectors देखें, so media was down by 2.29, which was one of the weakest sector, followed by energy down by 1.62, and so on. तो sector specific के charts देखते हैं. So Nifty IT monthly between 40-60, which means long term trend is still in a consolidation zone. Weekly is around 59-60, breakout के आसपास है. So again, this is also a very important zone for IT sector, because अगर breakout हो जाता है तो possibility है that IT sector could also be the next best performing sector. But again, वहां पे like overall best performing sector की कैटेगरी में आने के लिए all three time frames को 60 के ऊपर रहना होगा, which might take some time. But overall daily chart में भी it's already forming higher top and higher bottom, which is overall great, in fact, from like short term perspective as well. Then we have auto sector, all three time frames once again above 60. तो overall अगर मंडे से बुलिश साइड मूवमेंट देखने को मिलती है, so it will sustain above 60 on daily chart as well. And then auto sector will also be the next the next best sector, because वो all time high zone के आसपास ही है. And then we can see a fresh all time high rally on the positive note on auto sector. Then we have metal, monthly above 60, weekly around 60, and daily consolidation में है. Plus यहाँ पे lower top lower bottom series बन रही है. So for the time being we'll avoid metal sector. Then we have FMCG, all three time frames between 40-60, we'll absolutely avoid this sector. Then we have energy, अगेन यहाँ पे मंथली वीकली कंसोलिडेशन में है, डेली में तो 40 का भी ब्रेकडाउन कर चुका है, फॉर्मिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स. सो एनर्जी को भी हम लोग फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करेंगे. देन वी हैव फार्मा, मंथली अबाउट 60, वीकली कंसोलिडेशन में है, लाइक इट हैज अगेन रेजिस्टेड इन ऑर्डर टू ब्रेकआउट ऑफ 60, बट 60 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम जा रहा है, विच मीन्स ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स जो है थोड़ा सा डिस्पैरिटी चल रहा है, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम जो है उसमें रेजिस्ट हो रहा है, बार बार अटक रहा है. सो अगर अगर डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से मूवमेंट आती है, बुल्स का बहुत ज्यादा और स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेकआउट होता है, सो इवेंचुअली इट विल पुल वीकली टाइम फ्रेम एज वेल. एंड अगेन फार्मा विल गो इनटू द लिस्ट ऑफ आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, बिकॉज वहां पे तीनों टाइम फ्रेम 60 के ऊपर रहेंगे. देन वी हैव इंफ्रा, मंथली अबाउट 60, वीकली अराउंड 60, एंड डेली कंसोलिडेशन में है. फिलहाल फॉर द टाइम बिंग जब तक वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक इंफ्रा को अवॉइड कर सकते हैं. Then we have reality, monthly weekly between 40-60 and daily around 39. Plus यहाँ पे 40 के नीचे ही sustain कर रहा था since last 2 weeks, and it's forming lower top and lower bottom. So as of now reality sector को avoid करेंगे, because तीनों time frames are either between 40-60 or they are below 40 itself. Then we have a last sector, that is media. यहाँ पे तो तीनों टाइम फ्रेम्स आर बिलो 40, सो वील एब्सोल्युटली अवॉइड दिस सेक्टर, या फिर इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ वी हैव सम ऑफ द ग्रेट सेक्टर्स व्हिच आर like sustaining above 60 and so on, so we'll opt in for long side trades जहाँ पे like all time high zone है sector specific का भी and stock specific का भी, so as to make money on the positive side rather than taking trades on the shorter side, because media itself is one of the weak performing sectors since last so many months. So as of now इसको avoid करेंगे and we'll opt in for the long side trades and the top performing sectors rather than the most underperforming or the weakest sectors and so on. Although with respect to trading, if the sectors are performing good तो हमें long side trades लेने चाहिए, and if the sector is performing very weak तो उसमें हमें short side trade लेने चाहिए. But overall market all time high zone के आसपास है and so on, so why not opt in for those positive side trades rather than these short side trades and so on. That's what my recommendation is all about. Although आप short side trades भी ले सकते हो, it's not wrong at all. But again, if you're someone who is new to markets and new to overall analysis and so on, like technical analysis, I would not encourage you to opt in for futures and options जिसमें आप short side trade ले सकते हो. आप equity में shorts नहीं कर सकते हो. You can only short in options and futures जिसमें leverage भी ज्यादा होता है, risk भी ज्यादा होता है, but eventually it's all about psychology part which should be at its place, and उसको आपको practice करनी पड़ेगी, and you will have to have right psychology which will eventually happen while you're in the market and you have been profitable for so many months and years and so on. तब आपको confidence आएगा to take bigger risks and have those leverages and so on.
So I hope that you're going to follow this, and I hope that this analysis is absolutely clear to you. And please do make sure that you hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.